now we have Ms. Hagechumpi with us, who is the co-founder of TYK Clinic. Let us have a short conversation with her and ask some questions that our viewers or the patients mostly have while getting such procedures done. So जब हम ये clinic कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी शेम आता है, एंड देन पीपल थोड़ा सा बैक ऑफ होते हैं, एंड देन क्योंकि जब हम वुमेन एंड मेन के बारे में बातें करते हैं तो ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी को स्ट्रेस करते हैं. तो आपका क्लिनिक इसके बारे में क्या बात? So like aesthetic treatment, it does not mean just enhancing or altering the facial appearance of a person. So it's more about, it's not altering, it's more about enhancing the natural beauty of a person. So our main focus in TYK Aesthetic is more about building the confidence of people who come to us, because there is a stigma and shame associated with such treatments. It is often considered vain and shallow. So when people come here, we go for in-depth counseling with them, which builds their confidence. For example, people having for women especially, with scarring problem or with something that they don't like about themselves, it causes lots of anxiety, appearance related anxiety and depression, and that leads to social alienation as well, because they don't venture outside, out of concern for their looks and all. So mainly it's what aesthetic treatment does is it enhances the natural beauty, and so when they feel good, everything feels good, understand. So basically it's that. So it's more about enhancing their confidence. Recently, we have also seen many of the aesthetic clinics rise up in Itanagar capital region as well. So how is this TYK clinic different from all these other clinics? So in TYK Aesthetic Clinic, we have a group of medical doctors and nurses who are, and we have association with doctors. From time to time, we associated with doctors from outside, for certain treatments which are not done here. So we call doctors from outside, and even the staffs working here, they've undergone in-depth studies relating to facial anatomy, everything. So as you have mentioned, in TYK clinic, most of the nurses and doctors are well trained, but we have seen so many clinics pop up in ICR region where, according to some of the reports, they are not well trained to be conducting such intensive beauty procedures. What if one is not well trained while conducting such procedures? What are the dangers of it? So there are many complications related to this. As you know, something relating to the body, it's very personal and precious. So we have to take great care of what goes inside our body. So the difference is that here we have, like I mentioned before, well-trained doctors and nurses who perform such functions. So because they have learned and they have given their lifetime studying that material, the facial anatomy and all, so they know what they're doing, because they know the arteries well, where it's located, they know the nerves, they know the muscles. So when, for example, Botox and fillers and all, which is the most common aesthetic treatment done. So while injecting such thing, you should know what you're doing. So our doctors, what they do is, because they have an idea, so there's less chance. So what happens is when a untrained person does such stuff, since they don't know the anatomy of the body, so they can inject it anywhere. So it could lead to blindness, which is very major. So blindness is one of the examples I can give. Looks quite serious. And in TYK clinic, there are so many services that TYK clinic provides. Can you give us a little brief on what are the special services that TYK clinic provides? So the services we provide, first of all, is anti-aging treatments, and then anti-pigmentation, and we have anti-hair fall treatments as well. And then we have medical facials. So medical facials, it's not just a normal facial. So we undergo skin analysis first, and based on that, different skin texture, and also according to that, we give the patient treatment. And then we have chemical peeling, microneedling, and we have vaginal tightening, which is an upcoming thing. And we have fat graft. Fat graft, again, it's an alternative to, I'd say, fillers, which is we take fats from our own body and transfer it to different parts of the body, which is a more natural process and more safer. I'll say that. And many more. Thank you.
So as you've mentioned, so many procedures that TYK clinic provides, but some of the people who want to get these procedures done are quite hesitant because some of these procedures are quite expensive. What would you like to say on that? So basically I'll say it is a luxury treatment and it is expensive, but it is better to, like in TYK aesthetic, why I would suggest people come here, because it's local and it's here within our state itself, rather than like spending on flight tickets, going abroad, and hotel fees and all. So isn't it better to come here? And at the same time, we would not want to compromise with the products that we give people, and this is a booming industry, and the price is going to go up anyways as the future goes. So it is self-investment. So I urge everyone in the capital city to kindly visit our clinic, and we have a doctor present here for consultation, and do not hesitate. You can DM us in Instagram, and you can get your consultation done with a doctor, and don't be afraid or scared. It's a very simple procedure. So yeah, please do visit us. अपना आदमी यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है, सारा टीम जो है हमारा लोकल है। लोकल होने के नाते हम लोग का यहाँ समय भी बचता है, पैसा का भी बचत है, प्लस सिक्योर है। एक आपका माध्यम से एक क्लियर मैसेज ये देना चाहेगा, जितना भी अरुणाचल का, खास करके ईटानगर का जो आदमी है, आपका बदन को उम्र का मुताबिक, आपका बदन को अपना दिल का इच्छा का मुताबिक आप शेप साइज़ को, आप कलर को आप मेंटेन करना चाहता है। हर कोई कौन ऐसा बंदा होगा जो अपना शरीर को मेंटेन करना नहीं चाहेगा? गुड लुकिंग चाहता है, फ्रेशनेस चाहता है, और वो भी बाहर से, इंटरनली सिर्फ नहीं है। अब स्पा जाएगा, कहीं जाएगा, वो तो एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, 1 दिन 2 दिन का। यहाँ क्लिनिकली, मेडिकली इतना एक परमानेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, और अपना आदमी का बीच में इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम लोगों को ये करना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हम हमेशा से बोलता है, हम लोग दूर दूर में बैठ के ज़्यादा अंदाज़ा इमेजिनेशन नहीं लगा के, हम लोग का खास करके अबोतानी आदमी लोग जो ज़्यादा कमेंट्स करता है, डाउट पहले करता है। आप डाउट ना करें, ये लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने वाला जो है बाहर, हमको अभी यहाँ आके पता चला है वो फॉरेन कंट्री में, कोरिया में ट्रीटमेंट करके आया हुआ है, और थ्रूली ऑनेस्टली बता रहा है, वो लोग जो है डिग्री लिया हुआ है, वो लोग MBBS डिग्री प्रॉपरली लिया हुआ है, न्यूट्रिशन वाला भी वेल ट्रेंड है, और सारा इंटायर जो आपका क्रू मेंबर बोले या जो भी है टीम मेंबर बोलेगा, ऑल आर वेल ट्रेंड। इसलिए हम ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इधर आए, दूर जाने का वजह सामने में आए, और इसका फ़ायदा उठा है। खास करके हम ईटानगर का लेडीज़ लोग को हम ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा। हमारा लेडीज़ लोग, स्मार्ट सिटी का लेडीज़ लोग, पहले से हम बोलते हैं दिल दिमाग स्मार्ट होना है। सुबह भी हम लोग यहाँ में एक होम मिनिस्टर का साथ एक तो फर्नीचर का हम लोग वहाँ में उद्घाटन करके आया है। यह स्मार्ट सिटी में हर चीज़ का सुविधा होना है। सुविधा होने के साथ साथ हम लोग हमेशा बोलता है MC वाला, अपना कैपिटल सिटी में लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा नहीं होना है, ग्रीन होना है, क्लीन होना है। और आप लोग मीडिया वाला को भी हम दिल से नमस्कार करके बोलता है, आप लोगों को भी जो आपका डिग्निटी होता है, आपका जो सैंक्टिटी होता है, जो आपका एथिक्स होता है, सब चीज़ मतलब स्मार्ट सिटी माने स्मार्ट सिटी। और अभी का ये जैसे ट्रीटमेंट है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट सेंटर आ गया, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्मार्ट सिटी का फुल कंसेप्ट माने हर कुछ सेम होना है, लेकिन यहाँ में जो पब्लिक बैठता है, आपका थ्रो से हम ये आह्वान करेगा, आपका माध्यम से पब्लिक का भी मेंटेलिटी पॉजिटिव होना है। ये नहीं कि सारा सुविधा ठीक है, रास्ता ठीक है, पानी ठीक है, पूरा सरकार ठीक कर दिया, लेकिन पीपुल का माइंडसेट निगेटिव है। उधर तेरा मेरा करते रहेगा, उधर बन कॉल करते रहेगा, क्या करते रहेगा, फ़ायदा नहीं है। हम खास करके बन कॉल के बारे में इसलिए बोलता है, ये जैसे आपका एस्थेटिक सेंटर हो गया, आपका गरीब सब्जी बेचने वाला हो गया, पानी बेचने वाला हो गया, बने डाउन द लाइन, डाउन टू आर्ट्स वाला वेजेस हो गया, डेली वेजेस जो करता है, वो सब होना नहीं चाहिए। और ईटानगर में एक टेक लगने वाला है, अरुणाचल का कैपिटल तो बन कैपिटल होने वाला है। हम लोग दुनिया को कम्पीट करना है, दुनिया को कम्पीट करने के लिए हम लोग दुनिया जैसे दिल खुला होना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपना हागे मैडम मेरा सामने खड़ा है, सी ऑन दिस सिस्टम, और उसका जो मेडिकली जो एक्सपर्ट सिस्टम का साथ अपना वो मैनेज करके चला रहा है। और हमारा सारा टीम का ओर से हम, मेरा तरफ से भी हम बार बार बधाई देता है
और सर को भी बधाई देता है, किपा सर को, उसका मैडम भी है, और आपको भी स्पेस टीम को हम बधाई देता है। आप अच्छा से प्रचार कर दीजिए, और इसको इतना अच्छा चीज़ को छुपा के रखने से ठीक नहीं है। ये एस्थेटिक सेंटर को, TYK को, इसको छुपा के नहीं रखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करना है। सारा पब्लिक को हम यही दरख्वास्त कर देगा। माई अपील विल बी लाइक दैट।